जय जगन्नाथ सांग मैंने अपकमिंग आरआई अमीन मेन्स एग्जाम ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम ओआईएसएफ एमती की ओडिशार समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्यूटर आज हूँ 5th क्लास जो मैंने कंप्यूटर मॉक 1 रु मॉक 4 देखी ना से मो प्लेलिस्ट विजिट कर देखिपारे समस्त क्वेश्चन गुड़िक सिलेक्टेड क्वेश्चन तेणु वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखो आज सेसन जब आपण भल लगे ताहले वीडियो को गोटे लाइक करदे जो मैंने फर्स्ट टाइम मो चैनल को विजिट कर मो चैनल को सब्सक्राइब करदे चलतु आज सेसन को स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 101 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहाँ को 2FA सिस्टम बोली मध्य कहू से पचारिचे जे 2FA सिस्टम गोटे कंप्यूटर सिक्योरिटी रो बा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोली जहाँ को आम कहू ताहार ऑब्जेक्टिव बा मुख्य उद्देश्य कौन तार मुख्य उद्देश्य कौन प्रोवाइडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर यूजर आइडेंटिफिकेशन से गोटे एडिशनल लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करिबो जहाँकि यूजर आइडेंटिफिकेशन करने तेणु यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर यूजर आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 102 व्हाट इज द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंटरनेट एंड इंट्रानेट्स से कहिछि जे इंटरनेट एवं इंट्रानेट्स ए दुईटी मध्य मौलिक पार्थक्य कौन रही इंटरनेट जो रही ग्लोबल कनेक्टिविटी किंतु इंटरनेट जो रही लोकल यूज तेणु यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए जहाँ को आम कहीपर इंटरनेट हूँ गोटे पब्लिक नेटवर्क एवं इंटरनेट हूँ गोटे प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 103 ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज से कही कौन एकाठी लिंक होइतिबा वेब पेजेस गुडी को गोटे निर्दिष्ट क्रम रे जदि से माने एकाठी होंदी सेही संग्रह को बा सेही पार्टिकुलर ऑर्डर को कोन कुआ जे ताको वेबसाइट बोली कुआ जे तेनर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104 स्पीड ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड इन पीपीएम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम हमें प्रिंटर रो स्पीड टाको केमिति मेजरमेंट करबा जे गोटे मिनिट रे केतेडी पेज से प्रिंट करूची ताको देखि कि हमें कोन करबा जे से प्रिंटर रो स्पीड टाको हमें कहि परिबा ताहाको पीपीएम बोली कहा जाए से पीपीएम रो फुल फॉर्म कौन पेजेस फॉर मिनिट तेनर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105 मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर बा MICR मेनली यूज्ड इन द डेस इंडस्ट्री फर्स्ट हमको MIC रो फुल फॉर्म जदि पचारला आम जानले जे MICR रो फुल फॉर्म होचे मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर ए मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर मेनली क्यों क्षेत्र में व्यवहार करा जाउची यह बैंकिंग क्षेत्र में व्यवहार करा जाउची MICR बा मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर तेन यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106 व्हिच लेयर इज बेस्ट सुइटेबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन से पचारिछि जे सिंक्रोनाइजेशन एरर डिटेक्शन करिबा पई एवं करेक्शन करिबा पई केउ लेयर होची सबठार बेस्ट से लेयर होची कोन ऑप्शन डी डाटा लिंक लेयर। क्वेश्चन नंबर 107 which internet communication protocol is used for sending and receiving emails से कहिछि जे ईमेल आमे पठाइबा किंबा गोटे ईमेल को आमे रिसीव करिबा पई केउ इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल व्यवहृत हुए केउ इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल द्वारा आमे ईमेल को पठाइ परिबा किंबा से ईमेल को आमे रिसीव मध्ये करि परिबा से होछि SMTP रो फुल फॉर्म होछि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 108 व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर इन इंटरनेट एंड इंट्रानेट एनवायरनमेंट्स से कहिजे गोटे इंटरनेट एवं इंट्रानेट रे प्रॉक्सी सर्वर रो मेजर रोल कोन से कोन करे वेब कंटेंट गुडी को रो एक्सेस गुडी को से कंट्रोल करे तेनर करंट आंसर हो कोन कंट्रोल एक्सेस टू वेब कंटेंट एवं विषय वस्तु रे प्रवेश को नियंत्रण करिबा एहा होचे कहार काम प्रॉक्सी सर्वर रो काम इंटरनेट एवं इंटरनेट एनवायरनमेंट्स रे तेनर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी कंट्रोल एक्सेस टू वेब कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 109 व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस इन नेटवर्किंग कोटे नेटवर्किंग रे आईपी ठिकाना बा आईपी एड्रेस रो पर्पस कोन उद्देश्य कोन से गोटे कोन करिवो इंटरनेट रे को डिवाइस इंटरनेट से संजोग होइछि त आइडेंटिफाई करबा काम होछि कार आईपी एड्रेस रो देन यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन द इंटरनेट ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर।
एक नेटवर्क रे उपकरण गुड़िक बा डिवाइस गुड़िक चिन्हट करबा एवं से नेटवर्क मध्य तार स्थिति कौन अच्छी ताको दर्शाइबा ही कहार काम एही आईपी एड्रेस रो काम। क्वेश्चन नंबर 110 where data is recorded in a floppy disk गोटे फ्लॉपी डिस्क रे केउठरे डाटा गुड़िक रेकर्ड करा जाए डाटा गुड़िक जो रेकर्ड हुए बा स्टोर हुए डाटा गुड़िक रेकर्ड हुई से डाटा स्टोर केउठरे हुए सर्कुलर ट्रैक्स गुड़िक रे हुए तेनार करेक्ट आंसर अब ऑप्शन बी ट्रैक्स। क्वेश्चन नंबर 111 द इंटरनेट इज ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट कहार गोटे सिस्टम से नेटवर्क गुड़िकर कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स गुड़िक ही इंटरनेट बोली कहा जाए तेनार करेक्ट आंसर अब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस से कहिछि जे निम्नलिखित मध्यरु कहा द्वारा डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस बा बाह्य उपकरण गुड़ी को आमे संयोग करि परिबा आमे यूएसबी पोर्ट द्वारा आमे कोन करि परिबा कंप्यूटर सहित एक्सटर्नल डिवाइस गुड़ी जो रही से एक्सटर्नल डिवाइस गुड़ी को आमे कोन करबा कंप्यूटर रे संयोग करि परिबा तेनार करेक्ट आंसर अब कोन ऑप्शन बी एक्सटर्नल बस बा गोटे यूएसबी पोर्ट जहाँ को कि यूनिवर्सल सीरियल बस बोली कहा जाउचे ए एक्सटर्नल डिवाइस गुड़ी जहाँ रही जहाँ आम कहीपर कीबोर्ड कहीपर माउस कहीपर मॉनिटर कहीपर प्रिंटर कहीपर स्कैनर कहीपर ए सब गुड़िक हूँ गोटे गोटे कौन एक्सटर्नल डिवाइस गुड़िक तेनाली करेक्ट आंसर हम एक्सटर्नल बस। क्वेश्चन नंबर 113 आईसी और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ से कहिछि जे कंप्यूटर रे व्यवहृत होतबा आईसी चिप बा जहाँ को हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बोली कहू ता क्योंथि तयारी ता सिलिकॉन रे तयारी तेनाली करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114 इन बैंकिंग रेलवेज एक्सेट्रा व्हिच कंप्यूटर्स आर यूज्ड बैंकिंग क्षेत्र रे रेलवे क्षेत्र रे क्यों कंप्यूटर्स गुड़ी व्यवहार करा जाए सेटारे मेन फ्रेम कंप्यूटर गुड़ी व्यवहार करा जाए तेनाली करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 115 एबाकस वाज द फर्स्ट एबाकस कौन से गोटे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर तेनाली करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी। एवं ए एबाकस जो रही ताहा होची क्यों आसी ग्रीक वर्ड एबाक्स आसी मन रखिथे द ग्रीक वर्ड एबाक्स कौन आसी एबाकस आसी जहां मीनिंग होची कौन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 116 हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर इन कीबोर्ड कीबोर्ड रे केतोटी फंक्शन की रही है अपन मैंने जानी 12 फंक्शन की रही है कौन F1 टू F12। क्वेश्चन नंबर 117 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइजेस इन एमएस ऑफिस रे सबुठारु मिनिमम जूम करबा साइज मिनिमम केते बा मैक्सिमम केते मिनिमम होची 10 एवं मैक्सिमम होची 500% तेनार करेक्ट आंसर अब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118 व्हाट डज द टर्म ईमेल मीन ईमेल रो अर्थ कोन ईमेल रो अर्थ होची इलेक्ट्रॉनिक मेल तेनार करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 119 कॉलम बार पाई लाइन स्कैटर आर टाइप्स ऑफ ए जो रही कॉलम बार पाई लाइन स्कैटर एगुड़ी को कौन कह जाए एगुड़ी हूँ चार्ट रो गोटे टाइप चार्ट किंबा ग्राफ्स बोली आम कहि परिबा जहा कि यूज करा कौन डाटा विजुअलाइजेशन ए डाटा विजुअलाइजेशन जो चार्ट गुड़ी आम यूज करुचे से चार्ट हूँ चार्ट रो प्रकार गुड़ी हूँ कौन कॉलम बार पाई लाइन स्कैटर्स एगुड़ी तेनार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120 ए हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से कहिजे जे ए मध्यरो कोडा गोटे हार्डवेयर डिवाइस जहा कि डाटा को कन्वर्ट करूची गोटे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रे कन्वर्ट करूची सही हार्डवेयर डिवाइस कोने मध्य ता होचे प्रोसेसर ताको कोन कहबा प्रोसेसर कहबा ए प्रोसेसर को आ कोन कहि परिबा हमें सीपीयू बोली कहि परिबा सीपीयू होची कोन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोली मध्य हमें कहि परिबा ए सीपीयू होची गोटे हार्डवेयर डिवाइस जहा कि कन्वर्ट करूची गोटे डाटा को गोटे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रे। क्वेश्चन नंबर 121 रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन आमे जदी गोटे फाइल टी को नॉर्मल जदी आमे डिलीट करबा ताहा हेले ताहा केउठारे जाय ताहा स्टोर हेकि रहउची ता रिसाइकल बिन रे स्टोर हेकि रहबो केउठारे रिसाइकल बिन रे स्टोर होई रहबो जदी आमे सेही फाइल को जदी परमानेंटली डिलीट कर देबा पई चाहिबा जहा कि
रिसाइकल बिल को न जाऊनु ताहा को परमानेंट जदि आम डिलीट करबा ताहार शॉर्टकट की होउची कोन शिफ्ट प्लस डिलीट। क्वेश्चन नंबर 122 GUI stands for GUI रो फुल फॉर्म कोन GUI रो फुल फॉर्म होची ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तनो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 123 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRAM RAM रो फुल फॉर्म आपण जानि छथि रैंडम एक्सेस मेमोरी D रे कोन मन रखिथंतो डायनामिक तनो DRAM रो फुल फॉर्म होची डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 124 which of the following numbers is a binary number निम्नलिखित मध्यरु आमे केउ नंबर को बाइनरी नंबर कहिबा। बाइनरी नंबर केवल 0 एवं 1 को नै गठित प्रतिटी नंबर को आमे कोन कहिबा बाइनरी नंबर कहिबा तनर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए 0 and 1। क्वेश्चन नंबर 125 which of the following storage devices directly interacts with the CPU से कहिछि जे CPU सहित डायरेक्टली इंटरैक्ट रहिथिबा स्टोरेज डिवाइस कोन आपण माने जानि जंदी CPU सहित डायरेक्ट इंटरेक्शन कहार रहउछि RAM रो रहउछि जहा कि हमें रैंडम एक्सेस मेमोरी बोली कहू RAM रो तनोर करेक्ट आंसर होछि कोन ऑप्शन ए प्राइमरी स्टोरेज। RAM होछि गोटे प्राइमरी स्टोरेज जहार कोन परफॉर्म करबो से केवल रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करबा रैंडम एक्सेस मेमोरी तनोर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए प्राइमरी स्टोरेज। आ मन रखिथिबे बहुत थरो आसुछि SRAM रो फुल फॉर्म पचारुछि एवं DRAM रो मध्ये फुल फॉर्म पचारुछि आ गोटे RAM रो फुल फॉर्म पचारुछि RAM रो फुल फॉर्म होछि रैंडम एक्सेस मेमोरी SD रोइला पूर्व सेरा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी S रे होछि कोन स्टैटिक RAM रो होछि रैंडम एक्सेस मेमोरी SRAM रो फुल फॉर्म होछि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होछि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सांग माने अपकमिंग ARI AMIN मेंस एग्जाम ओडिशा पुलिस SI एग्जाम OSF एग्जाम एमती को ओडिसा समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई कंप्यूटर रो आज थिला 5th क्लास आज रो क्लास टे जदि आपण मन को भल लागिथिबो ताहेले वीडियो को लाइक कर देबे जो माने फर्स्ट टाइम मो चैनल को विजिट कर जदि मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। थैंक यू टू ऑल जय जगन्नाथ।